cyclic loop. It would be a complete cyclic loop. अगर हमारे पास जो वेक्टर्स हैं they are in equilibrium. ठीक है, चले. Now let's start with the most interesting subtopic in vectors, that is the resolution of vectors. Okay, so here it is on your screen. अच्छा, इस part में we'll be learning that how a vector that is acting at a certain angle, it's divided into two perpendicular components. The component, one component is along the y-axis and another component along the x-axis. What is the relation between the resultant vector with its components? What is the mathematics behind it, and how they are resolved, and how their mathematics is being proceeded. चलिए, सबसे पहले let's understand the logic behind components. What are components and how are they supposed to work? For example, if we have a vector f that was acting along an angle from horizontal or maybe from the vertical. There was a vector f drawn with respect to any angle. Now, if there's a vector and there's an angle, we can suppose axis जिसके रेफरेंस से हम इसकी ज्योमेट्री देख सकते हैं. Now what axes are? Axis कोई physical चीज तो है नहीं कि we must have a physical thing axis के नाम से. Axes are just a reference, a vertical reference and a horizontal reference. तो फिर हम अपने इस वेक्टर को इन vertical and horizontal references के थ्रू देखते हैं. If I talk about this vector which starts from this position and it moves along this path and ends at this point. So I can observe that from moving from this point till this point, it has covered a certain path in vertical direction also, and it has covered a certain path in horizontal direction also. So these are the two projections of vector f along y-axis and along the x-axis. For example, if it's a force vector, so the force must have two components. Effect of the force on x-axis is referred as the x component. The effect of the force on y-axis must be referred as y component. We usually refer them as fy and fx. And if it's, let's say, any other component of velocity vector, so I'll be referring it as vy and vx. If it's a momentum vector represented by p, I'll be referring it py and px similarly for any of the vector. Now, if the two vectors are drawn along the axis x and y, they must be perpendicular to each other because the components are perpendicular to each other. The axes are perpendicular to each other. Hence, that is why they are referred as perpendicular components. So, whatever the vector is, whatever its angle is, the components must be and will always be perpendicular to each other as they are along the axis. So, if a vector triangle is completed using the head-to-tail method, two components along with its resultant force, we can see a right-angled triangle because these two are normal to each other. Now, whenever we have a right-angled triangle, so we use trigonometry and we use Pythagoras theorem as a mathematics support. Okay, so what relation is possible relation could be between these three vectors could be explained through Pythagoras theorem. Now this goes as hypotenuse, and one of these is perpendicular and one of these is the base. So using Pythagoras theorem, मैं लिख सकता हूँ कि f square, like we knew that hypotenuse plus square is perpendicular square plus base square, right? So f square must be equal to fx square plus fy square. So if I have two components given like fx and fy are known, so I can find out the resultant vector of these two components by simply using the Pythagoras theorem. But what if I just have this vector f and now I'm supposed to find out their perpendicular components? I am supposed to find out what fx and fy, the values of fx and fy are.
So I'll be using further trigonometry in order to find out or calculate fx and fy. What trigonometric relation we have learned from our mathematics are, you must have learned these in mathematics: sine theta, cos theta, and tan theta. Now there must be some sentence in order to memorize these. In our time, our teacher taught us a sentence. It goes like, some people have curly brown hair to preserve beauty. Now I know that this sentence makes no sentence. Like, when you must have curly brown hair in order to preserve your beauty. And some even taught us that some people have curly brown hair through proper brushing. Now, ये तो बहुत ही useless sentence हो गया कि proper brushing के through the hair goes like curly also and brown also. तो अच्छा, these days if I ask about this sentence students से, तो वो मुझे ये बताते हैं, sir, we have learned it through so car to bar is something like that, like opposite hypotenuse, adjacent hypotenuse, and something like that. I'm not sure about it. ठीक है, तो we learned it through the terms base and perpendicular. ठीक है, so whatsoever the terms you are familiar with, you can follow it with that. ठीक है, तो I'll be using these trigonometric relations. मुझे इसमें पता है कि hypotenuse is this one, the resultant vector, and one of these fx and fy is base and the other one is perpendicular. Now, why I am referring one of these is base, why I'm not mentioning exactly which one is the base, because in order to find out which one is the base and the perpendicular या फिर adjacent opposite, जिसको हम in other terms बोलते हैं कि adjacent कौन सा है इसमें से, opposite कौन सा है इसके अंदर से, so we must know the angle. ठीक है, this totally depends upon the angle. Now I can have two angles, two different angles. For example, एक angle तो हमारे पास 90 है fixed है, because it's between the two perpendicular component, it has to be 90 degree. Other than this one, I have two angle. एक को मैंने यहाँ पे थीटा मेंशन किया. थीटा इज सिंपली सिंबल फॉर एंगल. एंड एक और जो मैंने दूसरा एंगल मेंशन किया, दैट वाज फाई. हम इसको फाई बुलाते हैं. इट्स अगेन अ सिंबल. ठीक है, so we know that the relation between theta and phi is of if theta is in like say any value theta, and phi would be 90 minus theta. If theta is 30, so phi would be 60. तो बेस कौन सा है और परपेंडिकुलर कौन सा है, इसके लिए ये पहले समझना बहुत जरूरी है कि एंगल में कौन सा वाला कंसीडर कर रहा हूँ. एम आई कंसीडरिंग थीटा या फिर मैं फाई को कंसीडर कर रहा हूँ एज एन. अब बेस कौन सा होता है वो मैं समझा देता हूँ. देखें, दिस साइड अलोंग द एंगल, लाइक इफ आई एम टॉकिंग अबाउट थीटा, ठीक है, वो कंपोनेंट या वो साइड दैट इज अलोंग द एंगल, एंगल के बिल्कुल साथ वाला होगा, इट इज रेफर्ड एज बेस या फिर इन अदर वर्ड एडजेसेंट. ठीक है, एंड द साइड ऑपोजिट टू द एंगल, एंगल के बिल्कुल सामने वाली जो साइड होगी, दैट इज रेफर्ड एज परपेंडिकुलर और ऑपोजिट साइड. So if I'm talking with respect to theta, so fx is the base or adjacent over here, and with respect to theta, fy is perpendicular या फिर opposite side to. अगर मैं phi के रिस्पेक्ट से बात करूंगा, तो phi के रिस्पेक्ट से fy would be the base or adjacent, and fx would be the perpendicular या फिर ऑपोजिट. ठीक है, ये क्यों जरूरी है कि मैं एंगल भी देखूं और फिर मैं इस बात का अंदाजा लगाऊं कि which one is base and which one is perpendicular, because I need to use these trigonometric relation, और उससे मुझे अंदाजा करना है कि जनाब मैं कौन सी साइड को बेस एंड परपेंडिकुलर. नाउ आप कैलकुलेट करते हैं इन साइड्स की वैल्यूज. फॉर एग्जांपल, नाउ initially I'm talking with respect to theta. For example, the given angle, जो एंगल हमें दे रखा हुआ है, that is theta. तो थीटा के रिस्पेक्ट से
along the theta जो हमारे पास साइड है जो कंपोनेंट दैट इज fx, तो fx हो जाएगा बेस and fy हो जाएगा परपेंडिकुलर. Our target is to find out the value of fx. x component की वैल्यू हम निकालेंगे. हम इसको y component and x component भी रेफर कर रहे होते हैं, तो हम फोर्स का या फिर वेक्टर f का x component निकालने जा रहे हैं. अब इट्स अ बेस एंड बेस का रिलेशन f से निकालना है which is hypotenuse. तो the relation that relates base and hypotenuse is cos theta. तो I'll be writing कि cos theta is equals to fx over f, right? And क्योंकि मुझे fx निकालना था तो मैं fx को सब्जेक्ट बनाऊंगा by simply multiplying the f on the other side. तो I'll conclude that fx is equals to f cos theta. Similarly, if I have to find out fy, your vertical component, your y component, so the relation that relates perpendicular and hypotenuse is sine theta is equal to perpendicular over hypotenuse. So I'll be writing sine theta is equals to perpendicular, that is fy, over hypotenuse, that is the resultant vector f. So I was supposed to find out fy only, तो मैं fy को सब्जेक्ट बनाऊंगा, f को डेल्टा करके मल्टीप्लाई करूंगा, तो fy की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी f sin थीटा. तो fx कहलाएगा f का कोसाइन कंपोनेंट एंड fy कहलाएगा f का साइन कंपोनेंट विद रिस्पेक्ट टू थीटा. अगर हम एंगल को थीटा कंसीडर करते हैं तो इन दो कंपोनेंट्स को हम परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स xy कंपोनेंट्स साइन कोसाइन कंपोनेंट्स के नाम से भी रेफर करते हैं. अच्छा, अब सेम कहानी अगर मैं रिपीट करूं बट विद रिस्पेक्ट टू द अदर एंगल दैट वाज फाई. ठीक है ना, मैं फाई से इसको अगर रिप्रेजेंट करूंगा, कैलकुलेट कर रहा हूं फाई को कंसीडर करते हुए, तो नाउ फाई के हिसाब से the opposite side is fx, तो वो हो जाएगा opposite या फिर perpendicular, and along the phi the component is fy. ठीक है, तो वो हो जाएगा आपके पास base. ठीक है, अब मैं fx अगर निकालूंगा with respect to sin, क्योंकि वो perpendicular हो चुका होता, तो I'll be using the relation of sin theta, sin phi. तो I'll be writing sin phi is equals to fx over the force f. ठीक है, तो fx की वैल्यू यहाँ पर मेरे पास हो जाएगी sin f sin phi, and similarly f क्योंकि अब मेरे पास बेस हो गया था तो आई एम यूजिंग cos phi, हो जाएगा f phi over f, जो कि मेरे पास बराबर हो जाएगा f phi is equal to f cos phi. तो यहाँ पे मैं बोलूंगा कि fx is f का sin component and fy is f का cosine component with respect to phi. ठीक है, तो एंगल के चेंज होने से डेफिनेटली साइन एंड कोसाइन में फर्क पड़ेगा. क्यों फर्क पड़ेगा जरूरी नहीं था, लेकिन जस्ट फॉर रेफरेंस मैंने यहाँ पे मैथमेटिक्स लिखी है कि वी नो दैट sin थीटा इज इक्वल्स टू cos 90 minus theta. So since phi is 90 minus theta, तो sin theta is equals to cos phi. तो जो यहाँ पे cos theta था, तो यहाँ पे sin phi है, जो यहाँ पे sin theta था, तो यहाँ पे cos phi. ठीक है, I hope this mathematics and this whole concept अच्छा था, समझ में आ गया आपको, कोई मुश्किल नहीं लगी इसके अंदर. Any question regarding this concept? And definitely we'll be doing a lot of questions right now in order to understand this concept in detail. Any question? Really? Then I'll be moving forward. Now, for example, यहाँ पे we have two already done examples. ठीक है, और उसके बाद फिर कुछ questions हैं जो कि हम एक साथ इस वक्त लाइव क्लास के अंदर सॉल्व कर रहे होंगे. फॉर एग्जांपल हमारे पास एक फोर्स वेक्टर था ऑफ 100 न्यूटन, राइट, एंड इट वाज डायरेक्टेड एट एन एंगल ऑफ 30 degrees from the horizontal axis, and we were supposed to find out its perpendicular components, the components in x and y direction. अब angle is measured through the horizontal, तो x जो हुआ वो मेरे पास बेस हुआ या फिर cosine component हुआ, एंड जो वर्टिकल एक्सिस था, जो वर्टिकल कंपोनेंट था, जो y था, वो मेरे पास हो गया
साइन कॉम्पोनेंट या फिर परपेंडिकुलर। अब यहाँ पे एक चीज आप ये देखें कि आई हैव ड्रॉन दिस कॉम्पोनेंट जिसको मैंने प्रीवियसली यहाँ बनाया था अकॉर्डिंग टू द अबव डायग्राम, यहाँ पे मैंने इसको इधर बनाया। So that is totally fine and I can draw these components anywhere but they have to be perpendicular in the magnitude and direction change. जो प्रॉपर्टी हमने पढ़ा था कि वेक्टर में भी डिस्प्लेस मैग्नीट्यूड डायरेक्शन चेंज ना होगा, तो वो हमने बेसिकली ये यहाँ पे अप्लाई किया। तो आई कैन ड्रॉ एक्स ओवर हियर आल्सो, मैंने वाई यहाँ ड्रॉ कर दिया, एक्स यहाँ पे ड्रॉ कर रखा है, राइट। तो अब x क्योंकि कोसाइन कंपोनेंट है 100 न्यूटन का, तो मैंने इसको निकाला 100 cos 30 तक, ठीक है। cos 30 की वैल्यू कैलकुलेटर से निकालेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, द वैल्यू वाज 86.6 न्यूटन, ठीक है। एंड y कंपोनेंट 100 sin 30 करके निकाला, sin 30 इज 0.5, तो वैल्यू आ गई 50 न्यूटन, ठीक है। सो दीज वर द टू कंपोनेंट्स ऑफ 100 न्यूटन। अब इस कंपोनेंट का इफेक्ट क्या है, मतलब इस कंपोनेंट का कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है। फॉर एग्जांपल this 100 Newton force is subjected to an object, that particular object will experience a force of 86.6 Newton in x direction and 50 Newton in y direction. If it's moved towards x, the force that is responsible in moving it towards x is 86.6 and y की तरफ 50। अब क्योंकि ये x और y में अलग तो जा नहीं रहा, it's going in a resultant direction, तो वो resultant force आपके पास 100 है। तो हमने इंडिविजुअल कॉन्सेप्ट कंपोनेंट्स निकाले थे कि इसका इफेक्ट क्या था। सिमिलरली देयर इज अनदर क्वेश्चन, देयर इज अनदर एग्जांपल, ये हमारे पास वेलोसिटी को रेफर कर रहा है बिकॉज हम अच्छा ये जो चीजें हमने पढ़ी हैं ये तमाम वेक्टर क्वांटिटीज के लिए वैलिड होंगी, चाहे हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, मोमेंटम, and not all, mostly examples we'll be covering of forces over here right now, and फिर later on क्योंकि हमने मोशन के चैप्टर के अंदर we have to cover a topic that is motion in 2 dimensions, तो वहां पे in detail velocity and displacement को भी हम देखेंगे, ठीक है। चलिए जी, a car covers 600 meters at an angle of 40 degrees from horizon, ठीक है। तो अगर 40 डिग्री फ्रॉम हॉरिजॉन्टल है, सो दिस इज द एंगल जो कि हम बनाएंगे फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल 40 डिग्री के ऊपर एक 600 न्यूटन का वेक्टर हमने बनाया। वी वर सपोज टू फाइंड आउट द कंपोनेंट्स। तो अगेन अगर मैं x की बात करूंगा तो x वुड बी द कोसाइन कंपोनेंट क्योंकि अलोंग द एक्सिस है, एंगल के साथ है, एंड द y कंपोनेंट वुड बी द साइन कंपोनेंट क्योंकि ये ऑपोजिट है टू द एंगल। तो हम कोसाइन कंपोनेंट किस तरह निकालते थे, 600 cos 40 एंड साइन कंपोनेंट 600 sin 40। तो जो हमारे पास डिस्टेंस आता है x डायरेक्शन में दैट इज 459.6, वर्टिकल एक्सिस में जो वर्टिकल कंपोनेंट आ रहा है दैट इज 385.7। अब ये बता रहे हैं कि अगर एक ऑब्जेक्ट इस पॉइंट से इस पॉइंट पर आता है, सो इट इज डिस्प्लेस्ड टुवर्ड्स राइट by a magnitude of 45.96 and it is displaced in a vertical direction with a by a magnitude of 385.7। अब ये अलग अलग डिस्प्लेसमेंट्स मैंने निकाल ली कि अपनी ओरिजिनल पोजीशन से कि x पे कितना मूव हुआ था, y पे कितना मूव हुआ था, ऑल्दो कि द रिजल्ट जो एक्चुअली उसका मूवमेंट था दैट वाज इन द रिजल्टेंट डायरेक्शन दैट इज 600 मीटर्स 40 मीटर्स के साथ, ठीक है। आई होप यहाँ तक बातें क्लियर हो। एनी क्वेश्चन टिल हियर? आई विल बी एक्सपेक्टिंग कि नेक्स्ट पार्ट आप मेरे साथ साथ सॉल्व कर लेंगे बिकॉज ये तो सॉल्व पार्ट्स थे, ठीक है। ठीक है, चलिए। अच्छा, अनदर एग्जांपल जिसको अब हम अभी यहीं पे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आई विल बी एक्सपेक्टिंग आंसर्स, तो बी प्रिपेयर्ड विद अ कैलकुलेटर। अब यहाँ पे हमसे बोला जाता है कि a car travels velocity at a velocity of 50 meters per second, here comes the magnitude, 30 degrees
फ्रॉम वर्टिकल। अब यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट आ गया है सिचुएशन कि हमें जो एंगल दे रखा हुआ है दैट इज अलोंग दी वर्टिकल एक्सिस। तो हमें वर्टिकल एक्सिस से अगर इसने हमें एंगल दे रखा है, तो अगर मैं इसके कॉम्पोनेंट्स बनाता हूँ, ठीक है, तो कॉम्पोनेंट्स क्योंकि मैंने कहा कि मैं किसी भी जगह बना सकता हूँ बट दे आर सपोज टू बी परपेंडिकुलर। तो दिस टाइम आई एम मेकिंग कॉम्पोनेंट एक्स, कॉम्पोनेंट में बनाऊंगा यहाँ पे this is velocity, so this would be Vx and y component मैंने यहाँ बना। अब एट टाइम स्टूडेंट को कंफ्यूजन रहती है कि सर एंगल तो बिल्कुल ही बदल गया था, एंगल नहीं बदला। इफ दिस एंगल वाज 30 ओवर हियर, तो एडजस्टेड एंगल होने की वजह से, अल्टरनेट एंगल होने की वजह से दिस इज 30 अगेंस्ट, ठीक है। तो y remains a cosine component and x still remains the sine component। तो बेसिकली वी वाई हमारे पास हो जाएगा बिकॉज इट्स अलोंग द एंगल, एंगल के साथ वाला है, तो ये हो जाएगा वी cos 30 एंड ये हो जाएगा वी sin 30, राइट। तो मैं वी एक्स एंड वी वाई की वैल्यू अगर सेपरेटली निकालूं, तो स्टार्टिंग फ्रॉम वी एक्स, वी cos 30 था, सॉरी वी sin 30 था, वी की वैल्यू है हमारे पास 50 इंटू साइन ऑफ 30। तो साइन ऑफ 30 इज एक्चुअली 0.5, तो 50 इंटू 0.5 हमारे पास हो जाता है 25 मीटर्स पर सेकेंड। सिमिलरली वी वाई अगर मैं निकालूंगा, तो वी वाई इज वी cos 30, यहाँ पे v की वैल्यू इज 50 अगेन एंड cosine of 30। तो आई विल बी एक्सपेक्टिंग आंसर फॉर दिस, ठीक है। कैन यू प्लीज फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ वी वाई फॉर मी। 7.71 or 7.71 or that value is, can you please confirm it again? बहुत छोटी वैल्यू है, छोटी हो नहीं सकती। Can you please recalculate it? देखें, let's do it step by step। Cosine of 30 is actually 0.866, right? Yeah, exactly. That's the answer. So that would be 43, 43.3 meter per second. So I hope you're getting a concept of this one. Okay, sure. Now here is uh, here is a practice exercise which we are not going to do right now because it's quite simple one. Okay, so I'll be sending the screenshot of this on the group and just for a good practice आप इसको एक दफा देख लीजिएगा। हाँ, एक दफा और practice देख लेते हैं for this one only and remaining जो है I'll be leaving as an exercise। ठीक है, एक question और देख लेते हैं because इसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन रहती है बच्चों को, राइट। सो an object is, example देखें, an object is acted upon by a force of 80 newtons at an angle of 25 from horizontal। Calculate the components of the two forces, ठीक है। now we know that कि हम horizontal axis से एक reference से 25 degrees के ऊपर we may draw a vector
ठीक है, हॉरिजॉन्टल रेफरेंस से 25 डिग्रीज के ऊपर एक 80 न्यूटन का वेक्टर हमने बनाया, और फिर हम इसके कंपोनेंट्स मेंशन करेंगे। ठीक है, सो लेट्स से जो कंपोनेंट्स मैंने बना रहा हूँ, एक कंपोनेंट मैंने यहाँ बनाया जिसमें वर्टिकल कंपोनेंट कहा, क्योंकि ये एक फोर्स फैक्टर है तो मैं इसको एफ वाई का नाम देता हूँ, एंड ये मेरे पास हो जाएगा एफ एक्स। ठीक है, सो एंगल इज 25। कैन यू सॉल्व दिस वन फॉर, फाइंड द वैल्यूज ऑफ एफ एक्स एंड एफ वाई। Before we move on to the next step, आप इसको सॉल्व कीजिए। Find the values of fx and fy. I hope सबसे पहले आपने components देखे होंगे कि which one would be a sine component, which one would be a cosine component. Fx is 72.5. Yes, that is the value. In what about Fy? 33.8 exactly. चले. So Fx is 72.5, and that's correct. Fy is 33.8. So far, you have the idea about what components are and how to find out the components. Okay, how to break a resultant vector into its perpendicular components. Okay, I'll be leaving this on the group as an homework. Okay, just to recall the concept before the next class. Now, the point is, we started with the point that we resolve the vectors in order to find out the resulting vector. रिजल्टिंग वेक्टर मालूम करने का हमारे पास एक तरीके कार था, the adding head to tail के through, and another method is by breaking the vector into its perpendicular combination. So what right now we are doing is we are trying to find out a resultant vector of two vectors
थ्रू रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। अब ये काम हम किस तरह करेंगे वो देखिएगा। अच्छा, we are given with two forces, one of 80 Newton, one of 50 Newton. 80 Newton force is at an angle of 60 degrees from horizontal axis in the first quadrant of axis, and the 50 Newton force it is acting at an angle of 30 in the fourth quadrant. ठीक है ना? अच्छा, ये first, second, third, fourth quadrant हमारे लिए मैटर नहीं करते. We'll be just looking the angle के angle हमें क्या given है, कहाँ से given है, एंड हमारा कॉम्पोनेंट क्या होगा, चाहे वो कोसाइन होगा या साइन होगा. दैट्स द ओनली थिंग दैट वी आर फोकस्ड ऑन. ठीक है, तो सबसे पहला काम क्या करेंगे? सबसे पहला काम हमने ये करना है कि हमारे पास जो वेक्टर्स मौजूद थे हमने इसको कॉम्पोनेंट्स के अंदर ब्रेक करना है. राइट, कॉम्पोनेंट्स के अंदर ब्रेक करता हूँ तो टर्न बाय टर्न सबसे पहले मैं 80 न्यूटन वेक्टर फोर्स वेक्टर को देखता हूँ. तो 80 न्यूटन फोर्स वेक्टर का एक हॉरिजॉन्टल कॉम्पोनेंट बनेगा अलोंग दिस डायरेक्शन एंड एक वर्टिकल कंपोनेंट बना अलोंग दिस डायरेक्शन. ठीक है, द डायरेक्शंस अक्सर एक कंफ्यूजन हो जाती है, सर व्हाट शुड बी द डायरेक्शन ऑफ द कंपोनेंट्स. तो देखें, फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट to the ending point it moves towards right in the horizontal axis, and from the starting point to the ending point ये vertically upward आया था. तो इसके रिस्पेक्ट से हम डायरेक्शन का अंदाजा लगाएंगे. एंड सिमिलरली फॉर अगर 50 न्यूटन वाली फोर्स की बात करूँ तो 50 न्यूटन वाली फोर्स वुड बी एक कंपोनेंट x axis के along and the other component y axis के, राइट. अब मैं इन कंपोनेंट्स को नेम भी कर देता हूँ, इन कंपोनेंट्स की वैल्यूज भी हम निकाल लेते हैं. वी नो दैट के जो हमारे पास ये वाला कंपोनेंट है दिस इज अलोंग द एडजेसेंट टू द एंगल. तो ये कोसाइन कंपोनेंट होगा. आई विल बी राइटिंग इट एज 80 cos 60 and the vertical component would be 80 sin 60. ठीक है, सिमिलरली 50 न्यूटन वाले का अगर मैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट देखूंगा तो आई बी सिंपली राइटिंग इट एज 50 cos 30 एंड 50 sin 30. इसकी डायरेक्शन इन माइनस साइन को इस वक्त हम बिल्कुल कंसीडर करेंगे. अगर आपके ध्यान में आएगा सर ये तो ऑपोजिटली डायरेक्टेड है, यस वील कंसीडर इट, बट यहाँ पे नहीं, हमने यहाँ पे तो इसकी वैल्यूज निकालनी है. अब since we have divided, since we have breaken this these vectors into its component, तो हमारे लिए we have now only four vectors, these two and these two. अब इन vectors का हमारे लिए कोई काम नहीं है because we have breaking them into their components. ठीक है, अब हमने करना क्या है, we'll solve them separately along x and along y. तो पहले मैं along the x axis solve करूंगा. along the x axis जो मेरे पास वेक्टर्स एक्ट कर रहे हैं पहले उनको, फिर along the y axis जो एक्ट कर रहे थे बाद में उनको मैंने सॉल्व कर दिया. along the x axis we have only two vectors, एक है 80 cos 60 towards right तो पॉजिटिव डायरेक्शन में, and 50 cos 30 towards left तो नेगेटिव डायरेक्शन. ठीक है, आई ऐड देम. कैसे ऐड करेंगे? जैसे हमने लास्ट क्लास में देखा था और अभी हमने देखा था, अगर हमारे पास पैरेलल वेक्टर्स हो तो अलजेब्रिकली ऐड या सबट्रैक्ट कर लेंगे. हम सिंपली ऐड करते हैं, ऑपोजिट डायरेक्शन होता है तो सबट्रैक्ट कर देंगे. तो हाउ विल बी सॉल्विंग इट? हम इसको लिखेंगे 80 cos 60. अच्छा, इट हैज टू बी प्लस माइनस 50 cos 60. हम इसको डायरेक्ट माइनस 50 cos 30 लिख सकते थे, लेकिन पहला स्टेप है तो लेट्स फॉलो द कंप्लीट मेथड. ये माइनस साइन यहाँ पे क्यों लगाया है? ये माइनस साइन ऑपोजिट डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है. दैट इज व्हाई इट इज बीइंग सबट्रैक्ट. ठीक है, तो सबसे पहले मैंने इसको अलग किया. नाउ अब मैं y को सॉल्व कर लेता हूँ. विल फाइंड आउट द आंसर एक साथ ही. y में both the y vectors are acting in upward direction, तो दोनों पॉजिटिव होंगे. one is 80 sin 60, other one is 50 sin 30. तो ये मेरे पास हो जाएगा 80 sin 60 प्लस 50 sin 30. सही है, तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं. थोड़ा सा मैं स्टेप बढ़ा देता हूँ बिकॉज इट्स फॉर द फर्स्ट टाइम.
तो कंफ्यूजन ना हो इसलिए थोड़े से स्टेप्स बढ़ा करके सॉल्व करूंगा एंड विद एम्पल प्रैक्टिस जब आपकी हो जाएगी तो ये जो स्टेप्स में बढ़ा रहा हूँ ये बिल्कुल ही अननेसेसरी स्टेप्स हो जाएंगे and you'll be doing it directly through the calculator. So 60 cos 80 because so this would be 40 minus this is 43.3. So the resultant would be negative 3.3. So resultant have its x component in horizontal direction of minus 3.3. Similarly, this would be 25 because sine 30 is 0.5 and I would be directly calculating the other value. 69.28 calculating 69.3. ठीक है 25 would give us 94.3. So what these x and y are? ये जो हमने x निकाला अलग से हमने जो हमने y निकाला अलग से ये है क्या इसको देखो x and y जो हमने separately solve किए थे x and y are components of the resultant. जो हमने इन दोनों फोर्सेस का रिजल्टेंट वेक्टर निकालना था उनके जो कंपोनेंट्स हैं वो x and y ठीक है ना नाउ वी नो दैट इफ वी हैव वेक्टर x and y ठीक है x और y कंपोनेंट मौजूद है और मुझे रिजल्टेंट वेक्टर निकालना है तो आई विल बी यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम तो अब जिस स्टेप की तरफ मैं जा रहा हूँ आई एम फाइंडिंग मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट फोर्स ठीक है कैसे करूंगा यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम रिजल्टेंट फोर्स would be x square plus y square under the root. तो वैल्यू ऑफ x वाज नेगेटिव 3.3 मैं यहाँ पे नेगेटिव प्लेस ना भी करता तो इट वुड हैव नॉट एन इशू क्योंकि स्क्वायर हो जाएगा ना तो 94.3 square entire under the can you please find out the value for me the magnitude of the resultant force I'll be telling now here. I hope you have calculated the value here. It is 94.4 newtons. This is the resultant force, the magnitude of the resultant force. ठीक है? Now comes the most important part जिसको अभी तक हम लोगों ने डिस्कस नहीं किया था that is the direction of the resultant force. ठीक है? तो फील्ड के एक वेक्टर को कंपोनेंट्स में कैसे ब्रेक करेंगे वो हमने यहाँ पर किया फिर हमने ये देखा कि जो रिजल्टेंट वेक्टर्स के कंपोनेंट्स थे उसको इंडिविजुअली एक्स एंड वाई के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करके कैसे देखेंगे तो हमने एक्स और वाई कंपोनेंट्स ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर्स यहाँ निकाल लिए थे एंड द लास्ट स्टेप जो हमने किया था दैट वाज मैग्नीट्यूड निकाला था ठीक है
तो वी न्यू दैट कि जो भी हमारे पास रिजल्टेंट के एक्स एंड वाई कंपोनेंट्स आए हैं उनका रिजल्टेंट इज द हाइपोटेन्यूज, ठीक है, और वो हमने पाते कि इससे निकाला था। नाउ कम्स द डायरेक्शन जिसको अभी तक हम लोगों ने डिस्कस नहीं किया हुआ, ठीक है। अगर हम डायरेक्शन की बात करते हैं तो यहाँ पे डायरेक्शन से मुराद वुड बी द एंगल। एंगल फाइंड आउट करना है, ठीक है। हम एंगल कैसे फाइंड आउट करते हैं? देयर वाज अ थर्ड रिलेशन, वी यूज साइन रिलेशन, वी यूज कोसाइन रिलेशन। हमने टेन रिलेशन को, टेन थीटा का रिलेशन को इस्तेमाल नहीं किया था। टेन थीटा का रिलेशन was tan theta is perpendicular over hypotenuse, sorry, base. We'll be using this relation to find out the resultant Mach vector का direction. किस तरह? We do have perpendicular, we do have base. थीटा निकालेंगे by tan inverse of plus y, that's the standard way, over plus x. So why mentioning plus y and plus x? Because if the values are in negative, just like in our example, the value of x component is in negative, we still write is as a positive because the negative value in tan theta makes no difference. ठीक है? So I'll be writing theta. I'll be writing theta tan inverse positive y, that was 94.3 divided by uh, positive x, that is 3.3. That would give me the angle. Please calculate the angle for this. (94.3) divided by 3.3. इसका tan inverse लेने हमने, ठीक है। (87.9), ठीक है। The angle is 87.9. अच्छा, now here comes an important point के where this 87.9 would be measured, ठीक है। क्या ये 87 यहाँ पे मेजर होगा या ये 87 यहाँ पे मेजर? अब इस बात को देखना है। तो सबसे पहले why I only selected the horizontal axis to measure the angle. The reason is कि मैंने x को base रखा, ठीक है ना। तो my x axis is the base, so angle would be measured along the from the as a reference from the horizontal, और y उसके सामने आएगा because मैंने उसको perpendicular रखा। तो ये बात तो obvious हो गई कि angle would be measured from either side but from the horizontal axis. एंड अब वो एंगल होगा किस तरह, मतलब वो मतलब इस क्वाड्रेंट में, एस क्वाड्रेंट में, इसके लिए यू जस्ट हैव टू फॉलो एक रफर साइड में, मतलब दिस इज नॉट रिक्वायर्ड बाय द एग्जामिनर, ये सिर्फ आपके लिए होगा कि एक रफली आपने बनाना है कि योर लेट्स से दिस इज योर ओरिजिन, ठीक है। यहाँ पे आपके पास जो एंगल आया था एक्स कॉम्पोनेंट आया था, दैट वाज अ वेरी स्मॉल 3.3 न्यूटन का एक कॉम्पोनेंट, एंड इसी के हेड टू टेल रूल फॉलो करते हुए इसी के हेड पे जो वर्टिकल कॉम्पोनेंट मैंने बनाया दैट वाज 94। नाउ डोंट यू नॉट रिक्वायर्ड टू फॉलो द स्केल वाली चीज, हम सिर्फ एक रैंडमली एक आइडिया के लिए कि वेयर वुड बी द एंगल वो बनाने के लिए, ठीक है ना। अच्छा, अगर मैंने इसको ऐसे रफली यहाँ पे बना दिया था, नाउ आई नो दैट कि जो रिजल्टिंग वेक्टर है वो कुछ यहाँ होगा। इट सिंपली स्टेट दैट कि अकॉर्डिंग टू माय एक्चुअल डायग्राम इट वुड बी समवेयर ओवर हियर, इस क्वाड्रेंट पे वो बनने वाला है। सो द रिजल्टेंट वेक्टर जो इन दोनों फोर्सेस का मेरे पास निकलने वाला है, इट इज ऑफ अ मैग्नीट्यूड 94.4 at an angle of 89. So the magnitude of the resultant force is 94.4, okay, and the angle
from the horizontal, it is 87.9. ठीक है जी. So I hope the concept of vector resolution is quite clear to you. We discussed what a vector, how a vector could have its projection on vertical and horizontal axis. What's the relation, mathematical relation between the resultant vector and its perpendicular fy and fx components? We solve it through using trigonometric ratios, या फिर हम Pythagoras theorem का इस्तेमाल कर लेते हैं. How we actually break them into components and how do we use components in finding out the resultant forces, resultant vectors in general. This actual method would be followed in for displacements also, for velocities, acceleration, I've already mentioned, for forces and all. We'll be doing most of the examples using force vectors because it is the part of the actually everything's part of the syllabus, but examiner would be asking questions mostly related to the force vectors. And in chapters mechanics, we'll be covering certain forces जहाँ पे हमने forces को resolve करना होगा, उनका resultant vector निकालना होगा, तो we'll be covering that part of the way. ठीक है? So we'll be ending up over here. We have next class on Monday, so there's a big gap. So I'll be providing you a little bit of homework, maximum by tomorrow, starting with this page, जो कि in which you just have to recall के हम components में किस तरह break करते हैं, and I'll be sending this file जहाँ पर हम लोगों ने resultant vector निकाला था अभी, just for reference if you have to go through it again in order to attempt the questions जो कि मैं अभी आपको आगे send करने वाला हूँ. ठीक है? So do attempt these questions. Take this as a reference अगर आपने steps को एक दफा recall करना हो कि हमने कौन सा step कैसे किया था. तो this is all for today. Inshallah, we'll meet in the next class. That is on Monday. Allah Hafiz.